Okay, so in this video we will be doing color PLC question, and the question first requirement is what is the split of annual overhead cost of each product using the existing method of labor hours to attribute overhead. Okay, so let's read out the question. ACCA PLC assembled three type of motorcycle at the same factory. Okay, so three type of motorcycles. So motorcycle. Okay, what is first is sunshine, other is road, ROAD, roadster, and third one is fireball, right? And historical, the cost has allocated all over overhead cost using total direct labor hours. So means previously company is absorbing the overhead as taking a direct labor hour as the basis, but it now is considering introducing ABC. ACCA PLC accountant has produced the following analysis. So basically, ACCA PLC accountant has given the annual output details of three motorcycles. So this is basically in the units, okay, and sunshine is 2000, 1600, 400. Annual direct labor hours. I I have written in the shortcut 200. 1 2 3 ये परसेंटेज नहीं है ये जनरल. ओके सो 1 2 3 कितना 6 हो गया. We need 5 0. And for roadster we have a annual direct labor hours of 220. 1 2 3. Again for the firewall 80,000. Okay. After that, selling price has been given and raw material cost per unit has given. The three cost driver that generate overhead are okay. Cost driver has given. So for the delivery to the retailers, this is the cost pool, and its cost driver is the number of delivery of motorcycle to retail showroom. Setups is cost pool, and its cost driver is number of times the assembly line process is reset to accommodate a production run of different type of motorcycle. Similar for the purchase run, cost pool and the cost driver is given. Annual cost driver volume relating to for each type of motorcycle are as follow. The annual overhead cost relating to this activity are as follows. So we do have given the total overhead, right? Okay, so एक second. Let's make a one column of total. Okay, so total overhead is annual overhead cost equal to 3 4 5 6. Okay, annual overhead cost. Now, what is the split of annual overhead cost of each product using the existing method of labor hour to attribute overhead? So basically, on the basis of traditional approach, previously company is using the labor hour to absorb the overhead. So now let's calculate the OAR, and OAR will be, first of all we need to calculate total direct labor hour, which is 50,000 hours, and OAR will be the cost divided by hours. So this is per hours, per labor hours. Now according to this we have to split this annual overhead cost between these three motorcycle. So overhead allocation or absorption जो भी कहो. So 24 into annual direct labor hours. Okay, this is for the sunshine, roadster, and for the fireball.
So this is the cost we have been split and इसका टोटल सेम आना चाहिए जो कि हमारा ओवरहेड का अमाउंट था. So it's 120 मैच हो रही है. ठीक है. So this is according to this our option among all four option B is suitable. Okay. Okay. So now next requirement is what is the level of overhead would be attributed to the fireball product if the Akbar PLC introduced ABC costing. So now on the basis of ABC costing, so according to ABC, we have to find out the overhead cost allocated to the product fireball. Okay. Now first let's write down the cost pool and the expected cost driver. Mm, okay, so cost pool, cost pool, okay, so bold, and cost pool details are given below. The first is delivery to retailers. This is our cost pool. Okay, let's write down. Then after that, setup cost, then purchase order. Okay, so let's write down its respective overhead cost to 2400,000, 6 million, 6 million, 3600, 1, 2, 3. So all together we have, okay, total overhead. Now let's find out cost driver. Okay, so cost driver for delivery to retailer is given above. Here the cost driver number of deliveries. So number of delivery to retailer is the cost driver for delivery to retailer. ठीक है. For setup, number of setup will be the cost driver, and number of purchase order for the purchase order overhead cost will be the cost driver. Okay, so now we have to add all these delivery. Okay, sunshine का, roadstar का, firewall का, so total क्या हो जाएगा? So 100 plus 80 plus 70. Number of setup के लिए 35 plus 40 plus 25, and for number of purchase order 400 plus 300 plus 100. ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ डिलीवरी आ गया और ये कॉस्ट नहीं है, बस नंबर है, तो जनरल में कन्वर्ट कर दिया. So now OAR calculate करते हैं according to this cost pool and cost driver. ठीक है. ओके, एंड इसका बेसिस ये क्या है आपका? पर डिलीवरीज टू रिटेलर, पर डिलीवरीज टू रिटेलर. ठीक है, एंड ये क्या है? पर सेटअप. ये क्या है? पर परचेज ऑर्डर. ठीक है. सो नाउ अब इसके बेसिस पे वी विल एलोकेट द कॉस्ट टू द ऑल द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट क्या क्या था हमारा? प्रोडक्ट है एक आपका है सनशाइन, रोडस्टर, एंड आफ्टर दैट फायरबॉल. ठीक है. सो क्वेश्चन हैज टोल्ड टू कैलकुलेट ओनली फॉर द फायरबॉल. ठीक है, तो फायरबॉल के लिए सिर्फ निकालते हैं. पहले क्या आ जाएगा उसके लिए? डिलीवरी कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट एंड परचेज ऑर्डर. ठीक है, किसके लिए है? इस सब के लिए मतलब कॉलम बनाया, बट अभी फायरबॉल के लिए सिर्फ निकालते हैं. तो डिलीवरीज के लिए OAR क्या है? एज पर द ABC इट्स 9600,
इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे आपका नंबर ऑफ डिलीवरीज टू रिटेलर सिर्फ फायर बॉल के लिए कितना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिलीवरीज टू द फायर बॉल 70, तो 70 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन सेटअप कॉस्ट का लेंगे OAR, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ सेटअप्स इन द फायर बॉल विच इज 25 एज पर द क्वेश्चन। सो 25 में 25 फिर से लास्ट परचेज ऑर्डर का 4500 इंटू नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर द फायर बॉल इज 100। सो इसको ऐड करने पे ये हमारा टोटल है जो कि क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट, ठीक है। सो ऑप्शन सी, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिफरेंस इन द ओवरहेड एट्रीब्यूशन फॉर द फाइल बॉल प्रोडक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू मेथड एंड हाउ इट मे अफेक्ट डिसीजन अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो एबीसी के अकॉर्डिंग 262200 आया और ट्रेडिशनल यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 192000। सो डिफरेंस तो आ रहा है। अब ये डिफरेंस पूछ रहा है लाइक ये क्यों है, स्टेटमेंट बताओ इसमें से दो कौन सा ट्रू है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और डिसीजन कैसे अफेक्ट करेगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो एक कहता है बोथ मेथड आर एक्सेप्टेबल सो मैनेजमेंट शुड नॉट बी कंसर्न इफ द ओवरहेड कॉस्ट आर हायर फॉर दिस प्रोडक्ट यूजिंग द एबीसी। ये तो बात सही है कि दैट बोथ मेथड आर एक्सेप्टेबल बट एबीसी मैनेजमेंट को कंसर्न होना चाहिए लाइक अगर एबीसी ज्यादा मतलब कॉस्ट दे रहा है तो क्योंकि एबीसी क्यों क्यों ज्यादा कॉस्ट दे रहा है बिकॉज एबीसी इज गिविंग द मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट एंड उसका एलोकेशन उसके अकॉर्डिंग करके उसमें ज्यादा आ रहा है। इग्नोर ये चीज को नहीं कर सकते, लिटिल डिफरेंस नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। So, it should be concerned, it should be bring to the concern of the management। पहला रॉन्ग। सेकंड एबीसी सीम्स टू बी, सॉरी मैंने दो बोल दिया था, नहीं यहाँ पे वन ही चूज करना है, मैं यहाँ पे टू इसको पढ़ लिया ट्रू को, मतलब एक ही चूज करना है। ओके, एबीसी सीम्स टू बी मोर यूजफुल मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट रिलेटेड टू द फायर बॉल as the low volume of fireball sales causes a relative high amount of setup, delivery and purchase process। अब बाकी का निकाल मतलब मेरे कहने का मतलब कि लाइक एबीसी यूज करने के बाद फायर बॉल का आप आउटपुट देखो, इट्स रियली लो एज कंपेयर टू द अदर टू प्रोडक्ट, बट इनका लाइक एलोकेशन अगर किया जाए ओवरहेड कॉस्ट का तो लाइक ज्यादा आया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये मतलब एबीसी यूजफुल है इन इस केस में। हम लोग ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो ये करते लाइक कम ही कॉस्ट आता है, सो तो अंडर का चांसेस था, प्रोडक्ट का कॉस्ट अंडर होने के चांसेस थे, बट एबीसी मतलब क्या कि मोर यूजफुल मतलब मेथड है और जो कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलोट किए तो फायरबॉल का कॉस्ट ज्यादा आया एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। सो ऑब्वियसली आपका सेकंड स्टेटमेंट सही कह रहा है ना। ABC seems to be more useful method for understanding the cost related to the fireball as the low volume of fireball sales causes a relatively high amount of setup, delivery and purchase process। अगर आप ये देखोगे चार्ट, चार्ट देखोगे तो एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड कॉल आ रहा है। ओके, सो वेयर वाज वी, अच्छा मैं कह रही थी कि आप अगर देखोगे नंबर ऑफ डिलीवरीज तो फायरबॉल के ही सबसे कम है, नंबर ऑफ सेटअप्स भी देखोगे तो फायरबॉल के ही सबसे कम है, इवन तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर भी, बट कॉस्ट क्या है हाई है। एक बार बाकी का कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ और नहीं है। सो डिलीवरी क्या है इसका आपका, फॉर द सनशाइन डिलीवरी इज 100 और फॉर रोडस्टर 80, ठीक है। आपका नंबर ऑफ सेटअप इज 35
उसके बाद 40, परचेज ऑर्डर 400, 300। तो ऑल्ट प्लस ये हमारा टोटल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, using the ABC is likely to result in a higher profit being recognized for the fireball product। अब फायरबॉल प्रोडक्ट के लिए हायर प्रॉफिट नहीं, लोअर प्रॉफिट होगा, बिकॉज इसका ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गया। ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा आएगा ना, सो लोअर प्रॉफिट कह सकते हैं। उसके बाद डी, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द ओवरहेड कॉस्ट फॉर द फायरबॉल इज टू फाइंड द एफिशिएंसी दैट रिड्यूस लेबर आवर्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर हम लोग लेबर आवर्स को लाइक रिड्यूस करते हैं, इट विल इम्प्रूव द ओवरहेड कॉस्ट इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग। एबीसी में नहीं इम्प्रूव करेगा आपका, ठीक है। हम लोग को एबीसी में अगर इम्प्रूव करना है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद ही हम लोग फायरवॉल का कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर लेबर आवर्स में फोकस करते हैं, देन इट विल इम्प्रूव द एबव, जो हम लोग पहले मेथड था ना ये वाला, यहाँ पे कॉस्ट इम्प्रूव करेगा। इसको थोड़ी ना हम लोग को इम्प्रूव करना है, सो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, सो 4 कहता है द फाइनेंस डायरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द फाइनेंस डायरेक्टर इज करेक्ट, ABC will not provide any further information listing how viable the fireball product is, and it's just different approach to allocating the cost। अगर देखा जाए तो हम लोग को ऐसे भी इसका लाइक जो फाइनेंस डायरेक्टर कुछ भी कहा हो वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे भी हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि एबीसी विल नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इन द असेसिंग हाउ वायबल द फाइबल प्रोडक्ट इज। इनफैक्ट एबीसी तो और मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट का, उसका कॉस्ट भी मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। तो ये ऐसे ही रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हुए हैं। क्या कहता है फाइनेंस डायरेक्टर, आई वेरी मच डाउट वेदर सेलिंग द फायरबॉल इज वायबल, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट एबीसी कॉस्टिंग वुड टेल अस एनी मोर देन यूज ऑफ द लेबर आवर्स इन असेसिंग द वायबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस तरह से रॉन्ग है, बिकॉज आपका एबीसी विल प्रोवाइड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है उसको और मतलब एक्यूरेटली डिटेल में प्रोवाइड मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सो दैट तुम्हारा प्रोडक्ट का भी कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो, तो और इन्फॉर्मेशन दे सकती है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग वाला, ठीक। तो 1 गलत हो गया, तो आपका ए बी तो ऐसे ही गया, बच गया सी एंड डी। 2 नंबर, marketing director is correct, ABC can't help with the improving our understanding of incremental cost of the product as it's just average cost of the entire product। अब ये भी फॉल्स है, लॉजिक लगाओगे तो एबीसी तो जैसे कि मोर एक्यूरेट कॉस्ट बताती है कि प्रोडक्ट इतना है, और जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि लाइक ट्रेडिशनल में और एक जो एबीसी फायरवॉल का जो डिफरेंस आ रहा था, जो इंक्रीमेंट कॉस्ट है, अब इस ये इंक्रीमेंट कॉस्ट लाइक ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, ये कैसे हुआ है, इसका रीजन क्या है। उसके बाद हम लोग लाइक जो भी कॉस्ट ड्राइवर इस कॉस्ट को इंक्रीज करिए, वी विल हैव टू मॉनिटर दोज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कॉस्ट। So obviously ABC help in improving our understanding of the incremental cost of the product, ठीक है। तो ये तो हमारा ये भी गलत है, तो ये 2 भी गया, तो बच गया डी, ओनली 3 इज राइट आंसर। अब वो क्या कहता है, वैसे भी अगर चाहो तो मार्केटिंग डायरेक्टर का पढ़ सकते हो पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ ये कह रहा है, I am in the process of negotiating a major new contract with a motorcycle rental company for the Sunshine model. For such a big order, they will not pay our normal price, but we need our at least cover our incremental cost. I am not convinced that ABC would achieve this, as it merely average cost of entire production।
ऐसा कुछ नहीं है, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, बस मैंने बताया आपको। लाइक एबीसी मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम लोग ने देखा ट्रेडिशनल में इतना कॉस्ट था एंड अब लाइक एबीसी की वजह से इतना कॉस्ट है। जो भी कॉस्ट इंक्रीमेंट हो रही है इसका रीजन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ड्राइवर ही होगा, उस कॉस्ट ड्राइवर को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे कैसे उसको कम कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा कॉस्ट भी कम कम हो जाए। थर्ड कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ करेक्ट, एबीसी नॉर्मली assume that the cost per activity is constant as the number of times the activity is repeated increase. In the practice, there may be learning curves such that the cost per activity are non-linear. As a result, marginal cost of increasing the number of activity is not same as the average. फिर से पढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इज करेक्ट, एबीसी normally assume that cost per unit activity is the constant and as the number of times the activity is repeated repeated is increase। अच्छा, लर्निंग कर्व पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारा लर्निंग कर्व लाइक क्या था वो डिक्रीज होती है तो हमारा कॉस्ट भी से डिक्रीज होता है ना, इंक्रीज होने पर हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, ऐसे कुछ करके था ना। एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये कह रहा है, अब इसके लिए हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर का? I believe that the ABC costing would be an improvement, but it still has its problem. For instance, if we carry out an activity many times, surely we get better at it, and cost fall rather than remain constant. इस तरह से आपका लाइक लिंक है लर्निंग कर्व से। अगर आपका लर्निंग कर्व या रेट इंक्रीज होता है इन दैट केस आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका वो आप और डिक्रीज होगा तो इट मींस कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। कैसे कि जैसे लाइक एक लाइक प्रोडक्ट अगर नया बना रहे हो इन दैट केस इट विल टेक इट टाइम, अगर रिपीटेड मोड में जा रहा है इन दैट केस आप फैमिलियर हो जा रहे हो तो लर्निंग रेट डिक्रीज होगा, उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा, कॉस्ट भी आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कॉस्ट सेम नहीं रहेगा, इट विल फॉल रादर देन रिमेन द कांस्टेंट। यही चीज को आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा है इस पैराग्राफ में कि इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है। 5 क्या कहता है, चेयरमैन हैज स्टार्टेड दैट इट इज रिलेवेंट विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड एज ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट विल बी अनचेंज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ईबीसी डिस्पाइट इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट। It can allocate cost to a specific activity with a complete accuracy. Which of the following is an advantage of using ABC despite it has no impact on overall company profit? अगर देखा जाए तो ये तो कॉस्ट को एक्यूरेटली एलोकेट तो करती है बट कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट ड्राइवर कितना एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है। इट इज क्विक एंड चीप टू यूज, एबीसी कम्प्लेक्स है एंड मोर कॉस्टली है, चीप भी नहीं है। ठीक है। इट इज मोस्ट यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द ओवरहेड आर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, अगर ओवरहेड इज स्मॉल प्रोपोर्शन इन दैट केस इट विल बी लेस यूजफुल। द ट्रेडिशनल अप्रोच ही सही है। एबीसी का आने का मतलब वही है कि आपका नाउ इट इज ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट इन द प्रोडक्ट, उसी इसका यूज होता है, अगर कम है तो नहीं यूज होगा, तो लेस यूजफुल बच गया डी। डी हमारा आंसर। तो क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एबीसी कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट को मोर डिटेल एनालिसिस करती है एंड आपको लाइक कॉस्ट मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट प्रोवाइड भी करती है। So D आपका इसलिए आंसर है। Okay, so next video we will do Hello Company.